हेलो गाइस, वेलकम टू द वन शॉर्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो सब्जेक्ट करने जा रहे हैं वो है बिजनेस लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ये द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एंड एक्ट 1930, ये जो आपको एज इट इज़ याद करना है, इसको आप ऊपर नीचे बिल्कुल मत करना। आप अगर इसको याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल्स। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नीड्स ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन एंड कॉम्पिटेंट पार्टीज। मतलब इसमें एक ऑफर होना चाहिए जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दोनों पार्टीज की, या जितनी भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है वो लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, और दो पार्टीज होनी चाहिए। उसके बाद है वॉइड, वैलिड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, void are illegal, and voidable can be cancelled by one party. उसके बाद है consent. It means agreeing upon the same thing in the same sense. मतलब अगर कोई चीज़ बोली गई है तो उसमें एक तरह से सेम ही समझ के और सेम ही चीज़ पे जो है एग्रीमेंट हुआ है। कंसिडरेशन, इट इज़ समथिंग ऑफ वैल्यू exchanged between parties to form a contract. Agreements in restraint of trade. Such agreements are void as they limit lawful business. Performance of contract. A contract is performed when all parties fulfill their obligations. मतलब जो उनको, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को करने को एक जो ऑब्लिगेशन मिली हुई है वो दोनों कंप्लीट कर रहे हैं, तभी वो परफॉर्म हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच एंड रेमेडीज. ब्रीच अकर्स व्हेन अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म रेमेडीज, इंक्लूड्स डैमेजेस, रिसेशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसके बाद है रिवोकेशन एंड टर्मिनेशन. Contracts can be ended by mutual agreement, breach, or impossibility of the contract. Agency and bailment contracts. Agency is a relationship where one acts on behalf of another. Bailment is delivery of goods for a purpose. Contract of indemnity. One party promises to compensate another for loss. Contract of guarantee. A third party assures performance of a contract. Pledge. Delivery of goods as security for a debt or obligation. Then we have Unit 2, the Sale of Goods Act 1930. Objective and definition of a contract of sale. It involves the sale or agreement to sell movable goods for a price. The price is decided by the parties. Sale versus agreement to sell. Sale transfers ownership immediately, while agreement to sell transfers it in the future or a later date. Definition of goods. Goods include every kind of movable property. Conditions and warranties. Conditions are essential terms, warranties are secondary terms. Implied conditions and warranties. Certain terms are assumed by law unless excluded by the parties. Performance of contract of sale. It involves delivery of goods and payment of the price, which completes the contract of sale. Rights of unpaid seller. The seller can retain or resell goods if payment is not made. Transfer of property.
Ownership passes from seller to buyer based on the contract terms. Then we have the Indian Partnership Act, which is 1932. Definition of partnership: it is relationship between persons who share profits of a business. Registration of a partnership firm: it is optional but provides legal benefits. देखो, पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको रजिस्टर करो, बट अगर आप उसको रजिस्टर कर लोगे तो आपको रिटर्न में लॉफुली आपके पास रहेगा कि किसकी पार्टनरशिप कितनी है और किसके पास कितना प्रॉफिट जाएगा, ताकि आगे जाके कभी डिस्प्यूट ना हो. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर: partners must act honestly, share profits or losses, and work in firm's interest. Dissolution of partnership: it is the end of a partnership either voluntarily or by law. LLP Act 2008, which is Limited Liability Partnership, formation and incorporation of LLP. LLP is formed by registering with the registrar with minimum two parties, partners and relations. LLP allows limited liability and structured partner relationship. Financial disclosure: LLP must maintain records and file an annual return. ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो, तो आपको जो है अपने रिकॉर्ड सारे मेंटेन करने पड़ेंगे और आपको जो है अपने टैक्सेस भी टाइम पे करने पड़ेंगे. कन्वर्शन इनटू एलएलपी: अ फर्म और कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू एलएलपी अंडर स्पेसिफाइड रूल्स. फॉर एन एलएलपी, LLP is formed outside India but operating here must register. Then we have Unit 3, the Companies Act 2013. Characteristics of a company: separate legal entity, perpetual, perpetual succession, limited liability, common seal, and etc. Types of companies: public, private, or government companies. Memorandum and Article of Association: MOA defines the scope, and AOA, which is the Article of Association, contains the internal rules. Prospectus: a legal document inviting public to buy shares or debentures. Valid meeting conditions: proper notice, quorum, agenda, and authorized person to chair. Kinds of meeting and resolutions, which is the AGM, EGM, board meetings, ordinary and special resolution. इनकी जो फुल फॉर्म है आप नीचे कमेंट डाउन करो. Directors and remunerations: directors manage company affairs and are paid as per the rules. Appointment and qualifications: directors must be competent and fulfill legal criteria, and उनको अच्छी knowledge and experience तो होना ही चाहिए. Powers and limits: director must act within the MOA, which is the Memorandum of Association, and the AOA, which is the Articles of Association, and in company's interest. Lifting corporate will: court looks beyond company to find real controllers in fraud class. Doctrine of ultra vires: acts beyond a company's scope are void. Doctrine of indoor management: outsiders can assume internal processes are properly followed. Winding up: it is the process of closing a company and distributing all of its assets. Unit 4, which is the Negotiable Instruments Act. What is the meaning of negotiable instruments? Written documents promising payment, which are the checks, bills, or the promissory notes.
What is promissory note? A written promise to pay at a certain sum, or a written promise to pay a certain sum at a later date. Bills of exchange, an order to pay money to a third party. Checks, a bill of exchange drawn on a bank payable on demand. Holder and holder in due course. Holder possesses instrument. Holder in due course gets in the good faith. Endorsements, signing to transfer ownership of the instrument. Crossing of checks ensures payment through a bank only. Dishonor and consequences, refusal to pay leads to legal actions और फाइन्स। तो ये थी एक वन शॉट वीडियो ऑफ बिजनेस लॉ। मैंने ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाया ताकि आपको एक क्विक रिवीजन मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड वीडियोस में कोई भी आपको कमी आती है फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।